भारत कनाडा के बीच जारी राजनयिक विवाद अब गहराता दिख रहा है। दरअसल भारत सरकार ने कनाडा की सरकार से अपने 40 से ज्यादा राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा के भारत में अभी 62 राजनयिक काम कर रहे हैं, जिनमें से 41 राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए अब भारत ने कनाडा को कह दिया है। तो क्या है भारत के इस कदम की वजह, इस पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो द्वारा जून महीने में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारतीय एजेंसियों पर लगाने के बाद से ही दोनों देशों में तनाव बना हुआ है और भारत कनाडा के आपसी रिश्ते इन दिनों सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के इस आरोप के बाद भारत सरकार ने भी कई कड़े फैसले लिए और कनाडा के एक राजनयिक को निष्कासित कर दिया। साथ ही कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं भी निलंबित कर दी गईं। यही नहीं, भारत सरकार ने जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को बेतुका बताते हुए उन्हें सिरे से खारिज कर दिया और साथ ही कनाडा से निज्जर की हत्या में भारत की कथित संलिप्तता के सबूत देने की मांग तक कर दी, पर अभी तक कनाडा की तरफ से कोई सबूत नहीं दिया गया है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने अब कनाडा को अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए कहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पहले ही साफ कर दिया था कि भारत में कनाडा का राजनयिक स्टाफ कनाडा में भारत के मौजूदा राजनयिक स्टाफ से काफी ज्यादा है और इसमें समानता होनी चाहिए। Let me start with some of the Rishabh, your query was on diplomats, Canadian diplomats here. Yes, we have informed the Canadian government that there should be parity in strength and rank equivalence in our diplomatic presence, in mutual diplomatic presence. Their numbers here are very much higher than ours in Canada. The details of this are being worked out, but I assume there will be a reduction from the Canadian side. हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान भारत कनाडा के बीच जारी विवाद पर बात करते हुए कनाडा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कनाडा की सरकार बीते कुछ सालों से आतंकवाद, कट्टरपंथ और हिंसा को बढ़ावा दे रही है। जयशंकर ने कहा कि भारत ने कई बार कनाडा सरकार से खालिस्तानी आतंकियों पर कार्रवाई करने की मांग की है, लेकिन कनाडा की सरकार ने अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जयशंकर ने यह भी कहा कि कनाडा में भारतीय हाई कमीशन और राजनयिकों को डराया धमकाया जा रहा है और उन पर हमले भी हो रहे हैं। यह कोई सामान्य घटना नहीं है और अगर दुनिया के किसी अन्य देश के राजनयिकों के साथ भी ऐसा हुआ होता तो क्या दुनिया के देश उसे लेकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते? But certainly the Canadian Prime Minister has made some serious charges recently. But I also see that from press reports that you have met while you're in Washington with National Security Advisor Sullivan, with our Secretary of State, Blinken, and that this subject has come up. Can you give us any information about how this is or isn't affecting U.S.-India relations, where this whole matter stands now from your perspective? Okay. Now, so let me start with Canada. Yes, the Canadian Prime Minister made some allegations, initially privately and then publicly. And our response to him, both in private and public, were that what he was alleging was not consistent with our policy. And that if his government had anything relevant and specific they would like us to look into, we were open to looking at it. Now, that's where that conversation is at this point of time. But to understand that conversation, you have to also appreciate that this has been an issue of great friction for many years with Canada, in fact going back to the 1980s. Then it became dormant, but in the last few years it has come back very much into play because of what we consider to be a very permissive Canadian attitude towards terrorists, extremists, people who openly advocate violence. And they have been given operating space in Canada because of the compulsions of Canadian politics. I don't think most Americans, for Americans, perhaps Canada looks very different, but it sort of
it depends, from where the interest, where the shoe pinches. For us, it has certainly been a country where organized crime from India mixed with trafficking in people, mixed with secessionism, violence, terrorism. It's a very toxic combination of issues and people who have found operating space there. So a lot of our tensions with Canada, which well preceded what Mr. Trudeau said, actually come out of that. And today I'm actually in a situation where my diplomats are unsafe going to the embassy or to the consulates. In Canada? In Canada. They are publicly intimidated, and that has actually compelled me to temporarily suspend even visa operations in Canada. So as I said, often countries look very different depending on how you see them and what your interests are. But I have this problem in Canada, and so your question, did I speak about it with Jake Sullivan and Tony Blinken? Yes, I did. अब अगर खालिस्तान के मसले को छोड़ दिया जाए तो भारत और कनाडा के बीच संबंध ज्यादातर सौहार्दपूर्ण ही रहे हैं, लेकिन ताजा राजनयिक विवाद के चलते आने वाले दिनों में दोनों देशों के संबंधों में तनाव और बढ़ सकता है, जिसका सीधा असर इन दोनों देशों के आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग पर पड़ने की पूरी संभावना है। अब सवाल यह है कि इस मसले से क्या भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक संबंध टूट जाएंगे या फिर भारत अपनी सॉफ्ट स्टेट की छवि को बदलने की कोशिश कर रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए द फोर्थ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद।